The films have sold us this idea of wearing pretty clothes and having Salman Khan pop out when you do Karwa Chauth. But Salman Khan's not going to pop out, the same old guy is going to pop out. And you got to live with the fuck fellow all your life. एक बार मैं मॉल में गई और एक औरत अपनी बच्ची को लेके घूम रही और वो बच्ची देख के मुझे थोड़ा डर गया, ट्रांसजेंडर हूँ तो देख के डर गया। उसकी माँ ने बोला देख मस्ती करेगी तो आंटी पकड़ के लेके जाएगी। तो मैं उसके बच्चे के पास गई, मैं बोला बेटा मैं तुझे नहीं लेके जाऊंगी, तेरी मम्मी को लेके जाऊंगी क्योंकि तेरी मम्मी तुझे गलत सिखा रही। हम लोग किसी के बच्चे को पकड़ते नहीं। Patriarchy has been absolutely devastating for men. The personal is political. That is one of the greatest lessons that we have all learned as feminists. The concept of smash the patriarchy isn't always applicable to corporate offices or businesses where we are constantly fighting to bring down the gender wage gap or finding our position, let's say, in a space like politics. That mostly deals with places where women hold a position of power. But look inwards, look at home. There's the benevolent kind of sexism which wraps itself in ideas that are good for you. For example, a woman shouldn't leave the house in the evening because she must be protected from the evil forces at work outside on the streets or in public. But simply the worst kind of patriarchy that we see play out every single day in dining tables in most homes in India is when the mother literally leaps across the table to get that one final chapati to give it to her son or her husband and completely ignores her daughters or sisters who might also be sitting on the table. Much worse, none of these men have had any role to play in getting that chapati on the table. The things we learn about gender at home, it's what we carry to the society, whether it's at the crossroads of caste, gender, sexuality, or our own choices. Just how do we navigate these inequalities? That's why on Sisterhood today, we're discussing patriarchy at home. In this episode, we speak to a large number of women about this patriarchal grip that doesn't leave us alone even at home. On the show is Ratna Pathak Shah, a very versatile actor who speaks her mind and says it on the record. Her iconic performances include Maya Sarabhai in the sitcom Sarabhai vs. Sarabhai, but also that of an older woman looking for her own sexual satisfaction and desires in Lipstick Under My Burqa. On the show today, she talks about how patriarchy grows at home and in how many small, different ways we propagate that not just as men but as women too. So I want to ask you my first question, which is patriarchy begins at home? Yes. The home is the nursery, I feel, of patriarchy. And women are, of course, the gatekeepers of this institution and definitely the ones who socialize their children into accepting norms of patriarchy that otherwise just are so downright, what shall one say, impossible to accept. So women are women's worst enemy. That piece of the patriarchy. What I really find very, very painful is when people keep saying a woman is a woman's worst enemy. That is said so often. And it is so unfair. A woman has been made to become a woman's worst enemy because she is the one who socializes within the family. She is the one who's laying down all these horrible laws. They're not laws she has made. They are laws which she has been told to enforce. She's like a hunting dog of patriarchy. That's what they've been used for over centuries. So I really take objection to that statement. So yes, the home is definitely and has been, I'll use my own experience for it. I can talk about the fact that I come from a family that's pretty progressive, liberal, not particularly conservative, and they are all very respectful of the position of women and how it has been decimated over Brahminical, witch rituals and stuff like that. But even in spite of that, subtly it was always communicated to us, all the girls in the family, there were a lot of us. So Pathak Khandan mein to sirf ladkiyan hi ladkiyan hain. So that kind of little jumla would be borrowed somewhere. Yeah. We would be told that my grandmother cried when my sister was born. Completely unnecessary. Even if it did happen, no need to pass it on now. No need to tell the rest of us about it. But these are the kinds of things that even in my other very, very liberal kind of family, I found it was very, very subtly put in. For example, when we were kids, I was in school and there were a whole lot of girls. I went to a Parsi school, Parsi Ram school, which means that I was
saved a lot of the ritualistic rubbish which Right. a lot of my other friends had to put up with. But in spite of that, there was this little festival called Moda Khas. Among the Gujaratis, they do this. Moda Khas, pre-puberty girls keep this little, observe the ritual. So they don't eat salt for the first 5 days in a year and pray for a good husband. Pray for a good husband. Yes, sir. Amazing. Okay. Yes, Did you I did it. practice that? Of course, I did it so happily. I was fully into it. All my friends were doing it, and at the end of the 5th day, you got to dress up and go to the neighborhood photo studio to get your photograph taken. All prettily dressed up and all that. And special food would be cooked for you. And I missed salt desperately, but I would still do this every year for 5 years. And somewhere towards the end, I began to feel, what's this? How strange is this? Once you attained puberty, you were supposed to move up and then do another set of 5 years called something Lakshmi or something Gauri. I can't remember now. And I didn't do those. But it was fantastic. It was just taken for granted. Nobody reacted, nobody objected, nobody... My communist mother, my mother who would be out in the streets shouting for Nari Shakti during the day, would put us to sleep singing lullabies which went... there's a lovely Gujarati lullaby. It's a very pretty sounding one. I don't sing well, so I'm not going to try. But it went, a sister talking to her brother. कि तमे तो पियर गणना सूडला कि तुम पियर मैके का मोर हो. अच्छा. हम तो तुम्हारे कंठ की सिर्फ किलकार हैं भाई. हाँ हाँ. तुम तो फूल हो, हम तो तुम्हारा सिर्फ पौधा है भाई. You know, that kind of constantly denigrating yourself. And it was so sorely accepted. She also didn't question it. When I grew up, I was amazed. ऐसा कैसे हुआ? But हुआ. Ratna Pathak Shah, thank you for saying it like it is. Well, another completely different perspective on motherhood from a trans woman who now looks after little children of sex workers when they're away at work. Gauri Sawant famously said, "You don't have to be a biological mother to mother a child." What is her perspective on raising children without biases? गौरी सावंत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया. आपके केस में एक बहुत यूनिक आप काम कर रहे हैं कि आपके पास आपकी अपनी एक बेटी है जो हॉस्टल में है और आप कई सेक्स वर्कर्स के बच्चों को अपने पास अज्जी के घर में रखते हैं जब वो सब काम पे जाते हैं. आपने मदरहुड को काफी रीडिफाइन किया इंडिया में, क्योंकि आपने कहा कि व्हाई डू यू हैव टू बी अ बायोलॉजिकल मदर to experience motherhood or raise a child. So आपके लिए वो एक्सपीरियंस आपकी बेटी गायत्री के साथ कैसा रहा? मैं हमेशा कहती हूँ कि मदरहुड इज ए बिहेवियर. टू लव समवन, टू केयर समवन, दैट इज अ मदरहुड. और जब हम बिहेवियर बोलते हैं तो उसके लिए जेंडर स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है. एक पुरुष या स्त्री या उसको यूट्रस होने की जरूरत नहीं. हाँ, किसी के ऊपर भी दिल से प्यार करो, वो मदरहुड है. हाँ. और ये हमको हमारी संस्कृति ने सिखाया है. आजकल बहुत सारे वीडियोस भी हम देखते कि बकरी कुत्ते के बच्चों को दूध पिलाती है या कुत्ता बिल्ली के बच्चों को दूध पिलाते हैं. हम देखा भी होगा आपने. तो जानवर पशु होके भी दूसरे के बच्चों के साथ तकलीफ नहीं देते. तो हम तो इंसान हैं. और जब मातृत्व की भावना आती है, किसी के साथ बेहद प्यार करना, दिल से प्यार करना, वो मदरहुड है. इसलिए मैं उसको डिफाइन ऐसे करती हूँ, मदरहुड इज ए बिहेवियर. उसको लेबल देने की जरूरत नहीं. हम सभी मदर है यहाँ पे. और ये पुरुष प्रधान संस्कृति जिसमें हम लोग बोलते हैं कि एक बड़ी हायरार्की है. मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और महाराष्ट्र में हमारा एक भगवान है विठ्ठल, जिसे हम विठ्ठू माऊली कहते हैं. एक पूर्ण पुरुष को हम माँ के तौर पे देखते हैं. तो मेरे संस्कृति ने मुझे सिखाया है कि हम पुरुष को भी माँ करके देख सकते हैं. थोड़ा डाइजेस्ट होने को लोगों को तकलीफ होती है कि ट्रांसजेंडर कैसे माँ है, बिकॉज वी आर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी. हम ये आपके पेट्रियार्की, आपके हायरार्की से बाहर फेंके हुए लोग हैं. तो मेरे और आपके रिश्ते की बराबरी कभी हो ही नहीं सकती. और इसलिए लोगों को थोड़ा डाइजेस्ट होने को तकलीफ होता है कि ट्रांसजेंडर मदर क्या है, ये क्या चीज. आप एज अ मदर अपनी बेटी को किस तरह उसकी परवरिश कर रही हैं? अभी आपने पुरुष प्रधान सोसाइटी की बात की, पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात की, कि किस तरह आप उनको इस सोसाइटी की जो एक तरह से कहते हैं ना, मतलब बंधन से, इस पेट्रियार्कल बंधन से ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं. अभी तो बहुत टाइम चला गया, लोग जानते हैं हालांकि. लेकिन अगर मैं 11 साल पहले पीछे चली जाऊं, तो जब मैं गायत्री को लेके चलती थी
तो रिक्शा वाला अपना रिक्शा का कांच का एंगल देखता था कि बच्ची कौन है। लोग उस तरीके से देखते थे कि ये हिजड़ा कहीं इस बच्ची को बेचेगा नहीं ना, इससे भीख तो नहीं मंगवा रहा है ना। मतलब लोगों के जहन दिमाग में ये कभी नहीं आता था कि ये भी उसकी माँ हो सकती। तो शुरू में बहुत तकलीफ होती थी और लोग ट्रांसजेंडर्स का मजाक उड़ाते, सेक्सुअली अब्यूज करते। उस तरीके से मेरे बच्चे के साथ भी करने की कोशिश की, पर उतनी मैं स्ट्रांग हूं कि वैसे होने नहीं दिया कभी। पर लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रांसजेंडर का अगर कोई औरत चली जाए तो उसका अगर कोई चिढ़ाएगा तो पब्लिक उसे मारेगी, लेकिन ट्रांसजेंडर का अगर कोई मजाक उड़ाता है तो कोई उसे चिल्लाता नहीं है। तो उस वक्त में जब मेरे पास एक सो कॉल्ड हेटेरोसेक्सुअल का बच्चा आ जाता है और मुझे पता है कि ये बच्चा ट्रांसजेंडर नहीं है, ये हेटेरोसेक्सुअल लड़की है, तो मुझे भी उनको उसी तरीके से देखना पड़ेगा ना। तो मेरे में बहुत सारे चेंजेस आ गए, क्योंकि गायत्री ने मुझे माँ के ढांचे में ढाला है। और प्यार तो हम सभी करते हैं, जैसे पेरेंटिंग वो एक जिन्स में हो जाता है, आ ही जाता है कि बच्चे को देखना है, और सिर्फ पैदा करना ही माँ नहीं है ना। मुझे आज भी याद है, मेरी बच्ची के बालों की चोटी बनाई थी, मुझे नहीं आती थी, मैं आजू बाजू वाले लोगों को बोलती थी। फिर एक दिन मैंने परेशान होकर उसका मशरूम कट करवा लिया और मेरी बच्ची रो रही थी, पर मैं उस बच्चे को समझा नहीं पा रही थी कि बेटा तेरी माँ को 2 चोटी डालने नहीं आती। आज तो फिलहाल मेरी बच्ची के बहुत बड़े बाल है, वक्त चला गया, पर इतने एक रात में बड़ी नहीं हुई है। हम दोनों के लिए कठिन था। मैं शुरू से एनजीओ से बिलोंग करती हूँ, आई वर्क इन HIV/AIDS सेक्टर्स। तो हमारे पास STI डॉक्टर्स, तो और मैं मेरे साथ ज्यादातर गायत्री एनजीओ में आने की, तो एक खुला वातावरण में बच्चे पढ़ते हैं एनजीओ में, और उनको पता था कि ये चीज है। मैं उसको बताती थी कि गुड टच बैड टच का मतलब क्या है, और मेरे पास आने वाले हिजड़ों को मैं आंखों से बोलती थी इसके सामने गाली नहीं देना, बिकॉज हम लोग बुरे हिसाब से हम लोग नहीं बोलते ट्रांसजेंडर्स, कैसी है करके गाली से शुरुआत करते। तो वो मैं थोड़ा चेंज करने लग गए, उनको भी समझाना कि बेटी के सामने इस तरीके से अब्यूजिंग वर्ड ना इस्तेमाल करो, ताली ना बजाओ, इस तरीके से वो रिलेशन हम दोनों का बिल्डअप। बच्ची को ढालना इतना आसान नहीं था मेरे लिए। मुझे आज भी याद है कि जब वो बड़ी हो गई थी, जब उसको पहली बार पीरियड्स आया था, वो ब्लैंक, मुझे नहीं पता था कि उसे डायपर किस तरीके से मैं बताऊं, समझाऊं कि तेरे हाइजीन के लिए तुझे किस तरीके से करना है। उस वक्त मुझे कहीं लगा कि जो छोटी 5 साल की बच्ची जब 14 साल तक होने तक तो मेरे पास ही थी, अचानक से एक दिन मेरी बच्ची बड़ी हो गई और अब मुझे उसे अपने हाइजीनिक के बारे में बताना है, पीरियड्स में किस तरीके से पैड्स बदलना है। आप समझने की कोशिश करो, गौरी के लिए क्या इतना आसान होगा? जो बच्ची मुझे बिंदास पकड़ के सोती थी वो नजरें चुराने लग गई थी, तब मुझे लगा कि मेरी बच्ची बड़ी हो गई, बट आई हैव टू टॉक विथ हर, क्योंकि मैं अगर नहीं बोलूंगी तो दूसरे कई बच्चा मिसगाइड हो जाएगा मेरा। फिर उसके लिए मुझे सीखना पड़ा कि इंटरनल क्या होता है, वजाइनल फ्लूइड क्या होता है, तुम्हें डिस्चार्ज आने के बाद क्या करना है, विस्पर किस तरीके से लगाना है। पहले मैंने सीखा, फिर मैंने मेरे बच्ची को सीखा, और मैं ये किसी के लिए नहीं करती, पर मेरे गायत्री के लिए मेरे लिए वो जरूरी था। तो मैंने वैसे कहा कि मैं बदलते गई थी। आप जो ये अभी बच्चों को अपने पास रखते हैं जब इनके पेरेंट्स सेक्स वर्क के लिए जाते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस इन बच्चों के साथ क्या रहा है? ये मेरी जो सेक्स वर्कर्स बहनें हैं, जैसे आप लोग वर्किंग वुमेन होती हो, आप अपने बच्चों को डे केयर सेंटर में रखते हो या कभी अपने माँ बाप के घर पे रखते हो, पर इनका कोई नहीं होता है। सेक्स वर्कर औरतें ये इंडिविजुअल है, उनका पार्टनर होता है जो उनके लिए सिर्फ पैसे के लिए उनके पास आता है, चला जाता है। ये औरतें शुरू से लेकर आखिर तक अकेली ही होती है। अगर इस दौरान अगर उनको लड़की हुई है तो ये नहीं सोचती कि मेरी बच्ची आगे जाके पुलिस इंस्पेक्टर बनेगी या टीचर बनेगी। माँ निर्धारित कर देती कि मेरी बच्ची आगे जाके भविष्य में सेक्स वर्कर बनेगी। कैन यू बिलीव? माँ खुद डिसाइड कर लेती, क्योंकि उसके दूसरा सोच ही नहीं, और उनके साथ मैं काम करती हूँ। अगर माँ सेक्स वर्कर है तो बेटी क्यों सेक्स वर्कर बने? और नानी का घर का कंसेप्ट ही यही है कि जहाँ पे ओल्ड ट्रांसजेंडर्स ये सेक्स वर्कर्स की बच्ची को हम देखते हैं, ये हायरार्की को कहीं ना कहीं तोड़ना जरूरी है। सुरक्षित वातावरण में बच्चे हमारे पास है, इसलिए नानी के घर में वो सेफ हैंड में बच्चे रहते हैं। आप अपने जो बच्चे आते हैं आपके घर में, या आपकी डॉटर भी है, आप उनको ऐसी क्या शिक्षा देते हो या ऐसी क्या 3 चीजें समझाते हो जिससे कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे और वो दुनिया से डर के नहीं रहे? डर के आगे जीत है, मैं हमेशा कहती हूँ। एक बार मैं किस्सा बताना पसंद करूंगी। एक बार मैं मॉल में गई और एक औरत अपनी बच्ची को लेके घूम रही थी, और मैं अपने डीमार्ट में जिस तरीके से शॉपिंग करते हैं मैं मेरी धुन में थी, और वो बच्ची देख के मुझे थोड़ा डर गया, ट्रांसजेंडर हूँ तो देख के डर गया। उसकी माँ ने बोला देख मस्ती करेगी तो आंटी पकड़ के लेके जाएगी। तो मैं उसके बच्चे के पास गई, मैं बोला बेटा मैं तुझे नहीं लेके जाऊंगी, तेरी मम्मी को लेके जाऊंगी, क्योंकि तेरी मम्मी तुझे गलत सिखा रही। हम लोग किसी के बच्चे को पकड़ते नहीं। और मैंने उसके माँ को पता कि आप जिस तरीके से ट्रांसजेंडर्स के लिए उनके दिमाग में डर खौफ फैला रहे हो, वो आगे जाके भविष्य में वैसे कैरी फॉरवर्ड होगा।
Right. मेरे बच्चे, अब मैं ट्रांसजेंडर हूँ, उन्हें पता है, बच्चे आते हैं मुझे मिलते हैं, वो मुझे भी माँ कहते हैं, उनकी माँ को भी माँ कहते हैं, मोटी आई कहते हैं मुझे। तो बच्चों को जिस तरीके से सिखाओगे, इसके लिए मैं कहती हूँ कि जेंडर इक्वालिटी के बारे में बोलोगे, हमको ट्रांसजेंडर क्या है ये स्कूल एजुकेशन में होना बहुत जरूरी है। अगर नर्सरी में अगर मेरे जैसे कोई ट्रांसजेंडर, उसको आया बाई का भी आप नौकरी दोगे, तो छोटा बच्चा स्कूल जाते जाते ये भी देखेगा कि मेरे घर में मम्मी को दाढ़ी नहीं आती, पर मेरे स्कूल में जो दूसरी टीचर उसे दाढ़ी आती है, तो शायद ये डर चला जाएगा और आने वाले 20 साल के बाद ट्रांसजेंडर्स के लिए जो नफरत है वो चली जाएगी। तो मैं मेरे बच्चों को सिखाते जहाँ डरना है वहाँ डर जरूरी है, पर ऐसी कौन सी चीज है जो हमें डरने के लिए मजबूर कर रही है। Joining me now is Kavita Arora. She's a child therapist. She's also somebody who's in a same-sex relationship and reflects on how sort of an upbringing that can be more open-minded can change the way we perceive relationships as we grow up. Therefore, her conversations with children and her observations with how they look at life completely fearlessly when they're growing up, but then boxed by society, are truly very, very insightful. Kavita, thanks so much for joining. You tell me, you talk about growing up, right? How are children today taking to the idea of same-sex parents? How are they coping with single, parent families? What is your interaction like with children who are exposed to what is this, perhaps, a revisit to the institution of marriage? I can tell you from my professional experience more than anything else. It is still new. It's still new age. The idea of either a single parent or a reconstituted family, the idea of a child having same-sex parents, all of this is very new. Schools often don't know what the narratives are behind it. They don't know how to handle it. Often they are looking for figuring out ways how to tell the children in the class about this. Often the really little ones, a 4-year-old or a 5 or a 6-year-old, and I'll tell you the incident of a small, I think 4.5 or 5-year-old, where one of the classes was on my family. So you drew who's in your family. And this little girl drew an unconventional family. And this was her first sort of understanding when she looked at the 30 other papers in front of her. This was her first understanding of my family looks different, because that's what some of the other children said. How come you don't have a daddy? Why do you call this one Papa when he clearly is not your Papa? That told her that she was different. Now, the teacher, being very well intentioned, had no idea how to handle it, because she had no idea what to tell the rest of the 29 children. She had no idea what she was permitted to say, because she herself did not have much knowledge about the background of the family. So this little girl came back home and said to her family, why are we different? Now, this was her first thing. And whether it's a 6-year-old then or a 9-year-old or a 10-year-old, by the time they're reaching an age where self-image becomes really important. I've had instances of 10-year-olds or 12-year-olds saying, we can't talk about it at school. I can't tell my peers that I don't have the conventional family, regardless of what, whether it is same-sex parents, whether it is I don't have a dad, whether I don't have a mom, whether I have a stay-at-home dad, or it is a reconstituted family. Any of this, children navigate on their own because they have understood by age 10 or 12, this is not acceptable. This is going to lead to marginalization of some sort, or bullying of some sort, or us standing out. And that's the age they want to belong. So they go to extra lengths to actually not stand out in this regard. And often that's the time that some of these conflicts within themselves start, which can reflect much later in their own intimate relationships about what their model of having a partner or having a family could look like. We are conditioned, we are conversed with, we are having these conversations within family, outside the family, that constantly remind us how insignificant we are, how much self-doubt we must have, how we're not worthy enough. For example, when we talk about women, we always raise the issue of their gender before what they do and what they achieve or why they fail. It's always about the gender. Joining me now are two very special guests talking about how we perceive the idea of patriarchy as something internalized at home. Thank you both for joining us. Many ways, patriarchy is
deeper roots lie in places that we don't think are the most likely ones. Just before coming in for this interview, I came across a meme which made a joke about how men are so careful even if they lose 10 rupees. And then Sitharaman, being a female finance minister, is quite chilled about the fact that the GDP is now at like minus 23%. And you're just dealing with this at everyday level, like, you know, it's in your face, but it's just funny. Why do you have to go all feminist on us? You know, that's not what we mean. You're supposed to take a joke. But that's the thing, that distinction in terms of the fact that, oh, this is just light everyday life. And to be able to identify the fact that it's light but it's problematic, like it reinforces so many ideas. I think that's something which is a part of our everyday reality. Growing up within the household, I did not really face any difficulties on this count. The biggest credit to this would go to my mother, who, I don't know if consciously or, subconsciously, was very clear in terms of like no discrimination in, what girls have to do and boys have to do. I think now, in hindsight, like after my 20s, when I started looking more critically at her role in our socialization, in our formation years, and that's when I realized that however she may have been groomed, she made a very conscious effort to not let that trickle down to us. So there was no thing about, you need to learn to cook or something. I have been very privileged, I would say. I live in a sort of bubble, I must say, where I'm seeing all of this, but not particularly experiencing it at a personal level. Damini, how was it for you? So coming from a conservative family, it has been difficult. But at this point of time, when I'm 22, and when I look back, I realized that the growth has been enormous. So I was sent to a convent girls institution as a part of my schooling, and we all know the kind of schooling that we get in a convent institution, where they actually take efforts, in really building up, women in a manner that they end up being docile. They have to follow certain mannerisms. They are disciplined in such a manner that they are not supposed to be that vocal, that open, but have to be in certain boxes, in certain frames in which they're supposed to work. So that's how the entire conditioning happens in a convent girls institution. The same thing happened when I joined my college. And again, when I joined my college, I was asked to take admission in a girls institution again. So 12 years of school plus 3 years of my undergraduation, I was taught in a convent girls institution and was asked to behave well and obey. So when I got the opportunity to clear my master's entrance further, I decided if 15 years is enough and I cannot take it more, I enrolled myself in a co-ed institution. I got the chance to stand for one of the biggest student level elections that take place at Delhi University. And I stood for the post of the president. And at that point of time, when I actually went on the field to fight in a hyper-masculine space, in a Savarna space of Delhi University elections is also a kind of a replication of the national level politics. When I actually reached at that space, I realized that 15 years of my life and plus 5 more early years, I was living in a cocoon. And that cocoon was so dangerous, so harmful. Though I knew about what I was being deprived of, I was aware about, certain discrimination taking place. I used to feel sad about it, but I kind of normalized it. It is only when I stood for the elections, when I just went out in the field, that I realized that the entire conditioning that I was going through was something that I shouldn't ever have considered it as normal. Since then, I've started speaking for my rights, for rights of other women, and the entire trajectory of patriarchy, caste, and other value systems have changed since then. True that, absolutely. Radhika, if one looks at the larger construct of intersectionist feminist awakening, if you were to pick 1 or 2 milestones in your life that might have led that, because most of us, are not aware of many aspects of feminism, as Damini just pointed out, when we're just trying to get our foot in the door to understand where we are. So maybe your experience as a feminist and what
or where did your feminist awakening arrive? I wouldn't be able to pinpoint on a moment, but I think particularly during my master's training, so I was at the Delhi School of Economics, I did a master's in sociology. I come from Bombay, and these conversations are not really something that are seen mainstream, because Bombay has this entire culture of, giving emphasis to work. Almost everybody is looking for some kind of employment. Certain kinds of, disciplines are given more preference because they will lead to easier employment opportunities as compared to others. So this was a conversation that I did not particularly, think about or read about even during either schooling or even undergrad for that matter. And I don't even remember why I chose the gender studies first. I genuinely don't remember. I mean, we were supposed to choose 6 papers, and one of them I chose gender studies. But that, for me, was revelatory. Wow, there are so many things to talk about and read about. At undergrad, it's only introductory in nature. I made a conscious decision to then choose those courses at the master's level, broaden my horizon. Fortunately or unfortunately, I've still been very privileged, so not really experience it at a personal level, except for that occasional question in a job interview which says that, so do you have plans of settling down? And I'm like, that is none of your business. But apart from that, really, I think opening up of ideas was, I think, in my 20s, definitely. And now in the last 5 years with my students, every day you get introduced to something new, because they keep having these amazing conversations, and they will keep, sending you more reference material. Like the first time I came across the term microaggressions was in class. I didn't know there was a term for that. I knew that, yes, this is happening around us, but it was in class that, they said microaggressions, and I was like, wow, that is a term to learn and remember. So it's been a decade-long journey. Joining me now is a young woman named Jagisha Arora, who's bravely been fighting a battle with her family for having been in an intercaste marriage. She questions Brahminical patriarchy as a person coming from the upper caste herself, and says that the way we raise our children, both men and women, makes a big difference to where and how we accept others in society. Did any specific incident lead you to recognize that the kind of patriarchal system you were being raised in had to be questioned? When I joined NGO, I started exploring myself. I started reading more, I started traveling more, because in my house my brother always stopped me from going outside. मेरा भाई मुझे ये बोलेगा कि तुम लड़की हो, तुम्हें हमेशा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, तुम्हें हमेशा नीचे होके बात करनी चाहिए, तुम्हें 4 बजे से बाद बाहर नहीं जाना चाहिए, शाम के 4 बजे के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें घर के किसी भी डिसीजन में अपना कोई पार्ट नहीं प्ले करना चाहिए, तुम्हें घर का काम करना चाहिए, अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो वहाँ के काम करने चाहिए. तो ये जो पूरा सेक्सिज्म और मिसोजिनिस्ट बिहेवियर है, मुझे घर से ही मिला है. जैसे मेरी एजुकेशन के लिए मेरे पेरेंट्स ने उतना फोकस नहीं किया, लेकिन मेरे भाई के एजुकेशन के लिए वो हमेशा वो रहते थे. When I started working and reading, then this feminist idea came under me. आपकी intercaste marriage थी, तो किस तरह की resistance थी घर पे, and how did you manage to sort of go ahead with it with so much resistance within the family? Actually, मुझे याद है जब I was dating my current husband, so मैंने उनके साथ picture post की थी, तो my brother told me that आपके पास सिर्फ 15 मिनट है, या तो आप वो पिक्चर डिलीट कीजिए या तो आप घर से निकल जाइए. मैंने ये रेजिस्टेंस किया कि मैं वहां से अपने घर से निकल गई. तो फिर उसके बाद मुझे बहुत सारी धमकी भरे कॉल्स आने लग गए, आप ऐसे करेंगी तो हम आपको ये कर देंगे, नुकसान पहुंचा देंगे. तो फिर हम पुलिस स्टेशन के पास गए. पुलिस स्टेशन में मेरी पूरी फैमिली आई, उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश करी. तो मैंने रेजिस्टेंस ये लिया कि जो इतने सालों का जो मेरा घुटन थी, जिस सफोकेशन में मैं अपने घर में रह रही थी, और मुझे लगता है बहुत सारी जो फीमेल्स हैं वो मेरे से एग्री करेंगी कि हम एक घुटन में रहते हैं, हम एक केज में रहते हैं, बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि अलाउ ही नहीं होती है. इसीलिए वो जो मैंने रेजिस्टेंस किया वो इसीलिए किया क्योंकि years of oppression, years of abuse that forced me to take that decision. And so you just heard Jagisha talk about so many different aspects of intercaste marriages and what it entails for families to accept that, or perhaps just give up on their own child. I also caught up with sportswoman Duti Chand, who is in a same-sex relationship, and she talks about some of the most intricate aspects of family relationships where
families just refuse to accept you, no matter what you've done, no matter how dear you are to them, and how today she herself has had to distance herself from her family and live away from them with her partner. एक लड़का के साथ मेरा रिश्ता था, वो मुझे प्यार कर रही थी, मैं इसको भी प्यार कर रही थी 9-10 क्लास के टाइम में, और रिश्ता भी बहुत अच्छा से चल रहा था हमारा। लेकिन 2014 में जब मेरा ऐसा केस हुआ तो उसी केस में सारे लोगों ने मुझे लड़का सोचा, तो उस दिन से मैं पूरा अकेले हो गई थी। 2017 में क्लासमेट थी, तो उन्होंने को मैं सारी चीज़ बता रही थी कि ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या करेंगे। तो उन्होंने मुझे बताया टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना शादीशुदा करके अकेले रहते हैं। मैं से भी इसको इतना ही बोला था कि मैं तुझे बहुत पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ तू मेरी लाइफ में सारी ज़िंदगी भर रहेंगे तो हम दोनों आराम से ज़िंदगी बिता सकेंगे। हमारे पास कोई कमी नहीं है, मैं तो इनकम करती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे परिवार लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे। तो फिर जब मेरा एज हुआ 23+ हुआ, तो फिर मैंने मम्मी को सिर्फ इतना ही बताया कि मम्मी मैं ये लड़की को शादी करना चाहती हूँ और इसके साथ रहना चाहती हूँ ज़िंदगी भर, आप इसमें क्या मत है। तो मम्मी ने तो बताया कि तू तो बड़ी हो चुकी है, सारी दुनिया घूम चुकी है, सारी दुनिया के बारे में तुझे पता है, और मैं तो लाइफ में अभी तक कभी देखा नहीं कि लड़की को शादी करने का, शायद ये संभव नहीं हो पाएगा कि हमारे गांव वालों ने इसको विरोध करेंगे। कोई बात नहीं, तुम ऐसा रिलेशनशिप है तो रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा, जब मन करेगा तुम शादी करना, कुछ सपोर्टिंग जरूरत होगा तो मैं करूंगी। तो मम्मी फिर मुझे फोन करके बताया कि दीदी तुम जो बोले थे रिलेशनशिप इसको छोड़ दो। तो मैंने बोला उन्हें तो पता है कि जो भी कुछ मदद पड़ेगा तो हम करेंगे, अभी क्यों मना कर रहे? नहीं बड़े दीदी मना कर रहे, तू ऐसा मत करो, तेरे वजह हमको ब्लेम होना पड़ेगा, सारी दुनिया हमको क्रिटिसाइज करेंगे, मैं नहीं चाहती कि तू फिर से ऐसा दोबारा गलती करो जो इसमें हमको ब्लेम होगा। तो फिर मैंने मम्मी को समझाया कि नहीं इसमें तेरा कोई ब्लेम नहीं होगा, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने 377 रूल को टाइम से हटा दिया, हम दोनों लिमिटेशन में रह सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने गाली करना शुरू कर दिया, फिर बोला कि तू ये रिलेशन नहीं छोड़ेगी तो घर मत आना। तो गुस्सा में बोला, तो फिर मैं शांत हो गई, थोड़ा घर को भी जाना आना बंद कर दिया। When we say change begins at home, it's because that's where patriarchy begins too, and so should your intersectional feminism. When it comes to women, we not only look at them from the lens of gender, but we also need to start recognizing that making it harder for women to just be who they are and live life on their own terms has a lot to do with whether or not this woman belongs to the upper caste, whether or not she belongs to a Dalit community, or any other. In fact, we also need to look at gender beyond the binary lens and encourage that as we look at smashing the patriarchy at home, that we are raising both daughters and sons and families that are inclusive, fair, and honest in their recognition for the need to review and fix the way we talk about women as a whole.